Now, asexual reproduction in multicellular organism. The first one is fragmentation. In fragmentation, what happens? Fragmentation में क्या होता है? The parent organism breaks up into two or many parts. So it breaks up into two or many parts, and each parts leads an independent life. तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म रहता है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट में टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और हर टुकड़ा या हर फ्रैगमेंट एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है. फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा, दिस इज़ एन algae. इन algae स्पाइरोगायरा जो रहता है फेवरेबल कंडीशन में बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है. इट गेट्स लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ग्रोज वेरी रैपिडली एंड ब्रेक्स अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, एंड ईच फ्रैगमेंट लीड्स एन इंडिपेंडेंट लाइफ. सपोजिंग इफ दिस स्पाइरोगायरा ब्रेक्स अप इनटू टू पार्ट्स or two fragments, then each fragment leads to an independent life. So each fragment will lead into an independent life. Another example is of sponge. So example of sponge is what? Cycon. So cycon also breaks up into many fragments and lead an independent life. Now, asexual reproduction in multicellular organism. The second type is regeneration. In regeneration, for example, they have given planaria. If the planaria breaks up into three parts, then each part will regenerate the remaining part of the body and lead an independent life. तो regeneration का मतलब क्या है? जैसे कि इधर प्लानेरिया दिया, अगर प्लानेरिया 3 टुकड़े में कट गया तो हर एक पार्ट जो रहता है, हर एक टुकड़ा जो रहता है, वो रिमेनिंग पार्ट को रीजनरेट करके लीड्स एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करता है. फॉर एग्जांपल द हेड पार्ट, इफ द हेड पार्ट विल if this planaria breaks up into 3 parts, then the head part will grow the remaining lower part body of the planaria and leads an independent life. The middle part will regenerate the upper and the lower part of the body and lead an independent life, and the tail part will regenerate the upper part of the body and leads an independent life. So हेड पार्ट जो रहता है, अगर समझो ये 3 टुकड़े में हो, जो हेड पार्ट है वो नीचे के पार्ट ऑफ द बॉडी को रीजनरेट करके इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है, और जो मिडिल पार्ट है वो अपर पार्ट हेड और टेल पार्ट को रीजनरेट करके इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करता है, और जो टेल पार्ट है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को रीजनरेट करके इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करता है. सो इन दिस from one planaria 3 planaria was formed by regeneration. तो planaria में यहाँ पे एक planaria से 3 planaria बना कैसे? Regeneration. Another example is lizard. You must have seen when the lizard is in danger, it discards or breaks a tail part and discards it, but after some days it is able to grow again the tail part. तो lizard जो रहता है जब भी डेंजर में रहता है तो अपना tail part का टुकड़ा जो रहता है वो डिस्कार्ड कर देता है, छोड़ देता है और एस्केप करता है, मगर थोड़े दिनों में वो लिजार्ड अपना जो डिस्कार्डेड टेल है वो वापस रीजनरेट करके ग्रो कर सकता है. सो दिस इज द सेकेंड टाइप, दैट इज रीजनरेशन. Now, asexual reproduction in multicellular organism. The third type is budding. Now, for example, in hydra, during favorable condition, the hydra grows a small outgrowth from its part of the body, and this outgrowth is known as what? Bud. And this bud, which is connected to the parent hydra, the dermal layer in the digestive cavity is connected to the parent hydra, and it gets its nutrition from the parent hydra. After some time it grows into a small nascent hydra, and this nascent hydra, when it grows, it gets separated from the parent hydra and leads an independent life. तो दूसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल क्या है? बडिंग. जैसे कि हाइड्रा में एक छोटा सा आउटग्रोथ ग्रो होता है जिसको बोलता है बड, और ये बड जो रहता है उसका डर्मल लेयर और डाइजेस्टिव कैविटी दोनों भी कनेक्टेड रहता है पेरेंट हाइड्रा के साथ. इसकी वजह से उसको न्यूट्रिशन पेरेंट हाइड्रा से मिलता है और थोड़े दिनों में वो बड़ा हो जाता है. व्हेन इट ग्रोस
इट गेट सेपरेटेड, वो पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करता है. सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग. Now the fourth type of asexual reproduction in multicellular organism is vegetative propagation. Now plants can produce new plants by the vegetative parts. So by vegetative parts like the root, stem, leaf and bud. So with the help of vegetative parts like root, stem, leaf and bud, if the plant is able to grow into a new plant, then this type of reproduction is known as vegetative propagation. तो vegetative propagation का मतलब क्या है? प्लांट्स का कोई भी पार्ट जैसे रूट, स्टेम, लीफ और बड, कोई भी पार्ट में से नया प्लांट, रूट के हेल्प से नया प्लांट बना या स्टेम के हेल्प से नया प्लांट बना, तो उसको बोलता है, ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. जैसे कि पोटैटो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेम. सो इन पोटैटोज देयर आर आईज, and the eyes, with the help of this eyes, they are able to grow into a new plant. This is an example of root, this is stem. So in root also, for example carrot, radish and all, the carrot, radish can produce new plant with the help of the buds present in the root. So with the help of the buds present in the root, they are able to grow a new plant. So this is an example of root. Now next example is bryophyllum. In this there are buds at the margin बोले तो end of the leaf, there are some buds present in the margin of the leaf, and at the buds, from this buds a new plant can be grown. Another example is sugarcane or grass. There are nodes present on the stem, and at the nodes there are buds. So buds are there at the nodes, and from this buds a new plant can be grown. तो ये पोटैटो जो रहता है वो स्टेम का एग्जाम्पल है. पोटैटो में आइज रहता है और ये आइस में से नया प्लांट ग्रो कर सकता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. कैरेट और रैडिश के रूट्स में बड रहता है और ये बड से भी न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन. ब्रायोफाइलम एक लीफ है, लीफ के एंड में बड्स रहता है, मार्जिन में बड्स रहता है और ये बड में से नया प्लांट ग्रो होता है. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीफ. शुगर केन में भी इसको नोड्स बोलते हैं, नोड्स में बड्स रहता है और ये बड से नया प्लांट ग्रो होता है. तो शुगर केन, ग्रास, from the buds are present at the node, you can grow a new plant. So this is an example of vegetative propagation, where new plants can be grown with the help of the vegetative parts like root, stem, leaf and bud. Now fifth type of asexual reproduction in multicellular organism is spore formation. Now if you keep a bread, moist bread for 2-3 days, you will see some fungus growing on it. तो अगर अपन एक moist bread लेगा और उसको 2-3 दिन रखेंगे तो उसमें white formation होता है जिसको बोलते हैं fungus. Now for example mucor is a fungus. If you observe under microscope, what you will see, there are many filamentous body. These are known as a filamentous body. So this is known as hyphae. And the roots coming out is known as rhizoids. From this hyphae, many round shaped structures are there at the end, which is known as sporangium. Inside the sporangium there are spores. When the sporangium is filled with spores, it will burst open and all the spores will get released. So when it bursts open, all the spores will get released from the sporangium, and if the spores comes and fall in the moist warm place, then a new fungal colony will start growing. So new fungal colony will start growing. Spore formation में क्या, अगर अपन moist bread को 2-3 दिन रखेंगे तो उसमें white जैसा structure form होता है,
जिसको बोलते हैं फंगस। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर, म्यूकर भी एक टाइप ऑफ फंगस है। इसमें बहुत सारा फिलामेंट टाइप ऑफ बॉडी रहता है जिसको बोलते हैं हाइफे, और ये फिलामेंट टाइप बॉडी में एंड में क्या रहता है, स्पोरेंजियम, राउंड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, गोल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलता है स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या रहता है, स्पोर्स। जब ये फुली स्पोर्स बन जाता है उसके अंदर तो ये बर्स्ट होता है, बर्स्ट होके सब स्पोर्स बाहर निकलते हैं। और अगर ये स्पोर्स बाहर आके कोई मॉइस्ट या वार्म जगह में आके गिरा तो यहाँ पे भी नया फंगल कॉलोनी ग्रो होने स्टार्ट करता है। सो दिस filamentous body is known as hyphae. This root-like structure is known as rhizoid. At the end there are round-shaped structure which is known as sporangium. Inside the sporangium is what? Spores. When the spores are released and falls on moist warm place, a new fungal colony starts growing.